Okay, so we'll continue our discussion on binomial theorem and see the previous sessions we saw that x plus e to the power n can be expanded in this form और हम लोग इसको क्या बोल रहे थे ये nc0 nc1 ncn इन सबको क्या बोलते थे हम लोग we used to call it binomial coefficient ठीक है मिडिल टर्म क्या होता है ये भी हम लोग देख लिए थे कि when the power is odd then there will be even number of terms so there will be two middle terms and when the power is even then there will be odd number of terms and in that case we used to have only one middle term. So see, now we'll discuss something called greatest binomial coefficient. So binomial expansion में what will be the greatest binomial coefficient? कौन से term का coefficient जो होगा वो मतलब binomial coefficient जो होगा वो greatest होगा और उसका value क्या होगा? So remember that the coefficient, the binomial coefficient of middle term is the greatest. Always remember that. Whatever is the middle term, its binomial coefficient will be the greatest binomial coefficient in that particular expansion. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब n इवन होगा मतलब कि अगर हम लोग x plus e to the power n लिखें तो इसमें जब n इवन होगा तब एक अलग सिनेरियो होगा तब बाइनोमियल कोएफिशिएंट कुछ और होगा मतलब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट और जब n ऑड होगा तब कुछ अलग सिनेरियो होगा तो देखो व्हेन n इज इवन तब हम लोग क्या देखते थे कि मिडिल टर्म क्या आता था मिडिल टर्म यूज्ड टू बी प्लीज गो थ्रू योर नोट्स n by 2 plus 1x टर्म होता था दिस यूज्ड टू बी द मिडिल टर्म तो हम लोग को इसका मतलब जानना ये है कि n by 2 plus 1th टर्म जो है उसका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा व्हेन n इज इवन तो याद रखना कि अगर हम लोग t r plus 1 लिखते हैं तो क्या होता है वो टर्म क्या होता है ncr x to the power of n minus r a to the power of r ठीक है जब हम लोग tr plus 1 तो उसी तरीके से सिमिलरली we can say that कि जब हम लोग t n by 2 plus 1 लिख रहे हैं then the term will be nc n by 2 x to the power of n minus n by 2 and a to the power of n by 2 so this should be the middle term when n is even तो binomial coefficient क्या है nc n by 2 so we can see that the greatest binomial coefficient when n is even will be nc n by 2 please write it down properly in your own language अच्छे से फ्रेम करके ओके सो व्हेन n इज ऑड तब क्या होता था देखो तब दो मिडिल टर्म आता था एक तो होता था n plus 1 by 2 टर्म और दूसरा होता था n plus 3 by 2 term. So there used to be two middle terms. ठीक है हम लोग को जानना है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा तो भाई देखो इसको भी तो वैसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना समथिंग प्लस 1 की टर्म जैसे मान लो अगर हमको 6 टर्म फाइंड करना होता है तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं 5 plus 1 and then we write nc5 ठीक है x to the power of n minus 5 e to the power of 5 ऐसे लिखते हैं ना सो फॉर एनी टर्म किसी भी टर्म का अगर हमको बाइनोमियल कोएफिशिएंट फाइंड करना हो या वो टर्म जानना हो तो वी ऑलवेज एक्सप्रेस दैट टर्म एज समथिंग प्लस 1 इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ठीक है तो यहाँ पे भी देखो जैसे ये n plus 1 by 2th टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा अगर ये जानना है तो हम लोग को इसको भी समथिंग प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा
तो सोचो कि हम लोग n+1/2 को ये लिखना है, तो ये ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? अगर हमको 6 को ऐसे लिखना है तो ब्रैकेट में क्या हम लोग बैठाते हैं 5, और ये पता कैसे चलता है 6 - 1 करके। सिमिलरली मान लो 8 को एक्सप्रेस करना है तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इस तरीके से। और ये यहाँ पे 7 होगा, ये कैसे पता चल रहा है 8 - 1 करके। तो उसी तरीके से यहाँ पे वो ब्लैंक जो स्पेस है उधर क्या होगा ये जानना है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, ये n+1/2 -1 कर सकते हैं। तो क्या आएगा देखो, take LCM, simplify it, you are going to get something like this, and it will be n-1/2. So n+1/2 can be represented as n-1/2 plus 1। ठीक है, इसी तरीके से इसकी तरीके से सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि n+3/2 इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है समथिंग +1, तो क्या करो फिर से -1 कर लो, तो -1 अगर करोगे तो इट विल बी n+1/2, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, so that's it. There will be two such coefficients, one will be n-1/2 वाला पार्ट और दूसरा ये वाला आएगा, देखते हैं हम लोग फाइंड करते हैं। So let us write these terms. This can be written as this, and the term will be nc n-1/2 x to the power of n minus whatever, a to the power of whatever. We are interested only in knowing the coefficient, the binomial coefficient, which is this. So this is the greatest binomial coefficient when n is odd. बोलोगे कि तब एक नहीं दो होना चाहिए भाई, बात तो सही है, दो होना चाहिए। n+3/2 टर्म जो होगा उसमें भी तो होना चाहिए ना, so it will be this, मतलब कि nc n+1/2 and so on, तो ये अपना binomial coefficient। Now interestingly what you will find is their values will always be equal for any value of n, ये दोनों का वैल्यू इक्वल ही आता है। ठीक है, if you put any value of n and you see that nc n-1/2 and nc n+1/2 they will have equal value. So either of these you can write, no need to write both of this, either of these you can say is the greatest binomial coefficient when n is odd, means when the power is odd. You put any value of n and check, you will always find these two values equal. क्यों भाई ऐसा इक्वल क्यों, तो याद करो प्रॉपर्टीज ऑफ NCR, एक प्रॉपर्टी था ना कि NCR इज ऑलवेज इक्वल्स टू NC n-R। तो इसका मतलब है कि जब भी, सी आई एम मार्किंग इट विथ रेड कलर, लेट मी मार्क इट विथ रेड, जब भी ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है इन दोनों का समीशन अगर ये ऊपर वाले के इक्वल आ जाए, मतलब n के इक्वल आ जाए, तो ये एप्लीकेबल है। देखो इन दोनों का ऐड करने से n आता है ना, तो यहाँ पे भी अगर इन दोनों का वैल्यू इक्वल, हम लोग बोल रहे हैं कि nc n-1/2 इज इक्वल्स टू nc n+1/2, तो इसका मतलब है कि क्या इन दोनों का समीशन क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, अगर इन दोनों का समीशन n है तो बड़ा ऑब्वियस सा बात है, ऐसा होना ही पड़ेगा भाई। टेक एलसीएम and you see 1 1 cancel हो गया, we will be getting 2n/2, 2 and 2 will get cancelled, it's n only। तो ये तो ऑब्वियस सा बात होगी, ये ऑब्वियस सा बात है इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर पहले ही देख लिए थे। So this is it from this topic, greatest binomial coefficient। Okay, so we are done with this greatest binomial coefficient, and now we'll move to this new topic which is rth term from n. Like suppose if I ask you what will be the 56th term in expansion of
say x minus 2 to the power of 74. You can easily answer this because I have asked you what will be the 56th term in the expansion of this. So you will be like, okay, we will write it as this 56, which can be written as 55 plus 1, and then it will be NCR. Here the value of n is 74. This you can easily answer. Okay, but now suppose there is a twist in the question, and I ask you 56th term not from the beginning, 56th term from end in expansion of, I'm not writing it, this. Now the answer will not be same. Oh, sorry, I have not completed it. You all please complete it. So if I say 56th term from end in the expansion of x minus 2 to the power of 74, now it will be difficult for us to answer it directly. Now we cannot say that it will be t56 and t55 plus 1. No, it will be something else. So the only thing which we need to do is we need to know if we are talking about the 56th term from end, then what will it be from the beginning. मतलब कि अगर बोल रहे हैं 56 टर्म फ्रॉम एंड, तो भाई अगर स्टार्टिंग से देखें तो वो क्या होगा, 30वां 32वां क्या टर्म होगा. अगर ये पता चल जाए तो हम लोग तो फाइंड कर ही सकते हैं. ठीक है, तो अपना यही अब एम है. तो हम लोग को आंसर मतलब ये तो जनरलाइज करके फाइंड करना होगा कि व्हेन पावर इज n, तब वो rth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा. तो इसको हम लोग n और r के टर्म्स में ही जनरलाइज करेंगे, लेकिन डेरिवेशन के लिए फॉर डेराइविंग और थोड़ा लॉजिकली हम लोग को भी समझ में आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज x प्लस ए टू द पावर ऑफ 7 और इसको हम लोग एक्सपैंड किए. So there will be 8 terms. We all know the number of terms is obviously 1 greater than the power itself. So there will be 8 terms. Let me write it down. Okay. अब यहाँ पे देखो हम लोग बाद में n और r से रिप्लेस कर देंगे इन सब वैल्यूज को. Here n is 7, तो हम लोग पहले 7 और ये नंबर्स के टर्म्स में रिलेट करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको n और r के टर्म्स में लिख लेंगे. ठीक है. So if I say what will be the first from end, first from end, it is t8, 8th term. So हम लोग को रिलेट क्या चीज को करना है, we have to relate these three parameters 7, 1 and 8 जो आ रहा है, इसको कैसे रिलेट करें. अब एक को खाली एक को तो ऐसे रिलेट कर सकते, बोलोगे कि अच्छा 7 plus 1 करने से 8 आ गया, you can say that. बट द थिंग इज कि ये हर एक के लिए वो रिलेशन जो है वो हर एक के लिए वैलिड हो. जैसे कि अगर हम बात करें कि सेकेंड फ्रॉम एंड, इफ आई से सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, देन इट विल बी t7. ठीक है. सिमिलरली इफ वी से दैट थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, so it is the sixth term from beginning, t6. If I say fourth term from end, then it is t5 or fifth from beginning. अब सोचो कि अब तो कुछ 4-5 वैल्यूज लिख ली, तो अब सोचो कि इन सबको कैसे रिलेट किया जाए. क्या इसको रिलेट करना है, देखो 7, 1 and 8 and the same relation should be shared by 7 to 7. मतलब ये टर्म्स लिख रहे थे, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, तुम लोग बोलोगे कि ये वैल्यूज लिख कहाँ से रहे हैं. n is 7, इसलिए इधर 7 लिख रहे हैं. ठीक है. फ्रॉम एंड कौन सा टर्म बोल रहे हैं, वही मतलब ये अपना n हो गया, ये r हो गया, एंड दिस इज कि हम लोग को जो टर्म जानना है वो टर्म फ्रॉम बिगनिंग जो भी हो. ठीक है. इफ अब सोचो कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जो इन सब को रिलेट करता हो, ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड विद दैट सेम रिलेशन. सोचो. Okay, like you may say that here the relation is 7 plus 1 is 8, but see it is not valid for the second one. 7 plus 2 is 9, but we need 7 here. Okay, but how about this relation, Sochu? How about this? What is it? Is it matching? No, it's not. Okay, what if we do plus 2?
कितना है देखो 7 minus 1 is 6, 6 plus 2 is 8. Okay. Again here 7 minus 2, देखो ये जो r है ना उसको माइनस करो, n से r को माइनस करो, प्लस 2 कितना आ रहा है 7 minus 3 plus 2 कितना आ रहा है, देखो सबके लिए वेरी वैलिड है ना ये रिलेशन, देखो सबके लिए मैच कर रहे हैं रिलेशन. सो व्हाट रिलेशन डिड वी गेट, वी गॉट द रिलेशन एज n minus r plus 2. So now we can say that rth term from end is, now we can say that rth term from end in the expansion of x plus a to the power of n is n minus r plus 2th term from beginning. And always you should derive relations in this manner. Okay, now let us get back to that example in which I say to find the 54th term. Where was it? Okay, this is the 56th term from n. तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 74, और हम फाइंड करने क्या बोले हैं 56th term from end. तो basically which term we need to find, we need, let me write to here. We need to determine this term t74 minus 56 n minus r plus 2, which is t how much 18 plus 2 20. तो उसको तो फिर 19 plus 1 लिख करके तुम लोग फाइंड कर ही लोगे. ठीक है, तो बस हम लोग को हमेशा जब भी rth टर्म फ्रॉम एंड बोलेगा तो बस ये जानना है कि भाई वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, एंड अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड इट. ओके, now let us solve few questions. Okay, so let us solve this question. Find the fourth term from end in the expansion of x cube minus 1 by x whole to the power of 9. तो भाई क्या होगा, अगर हम लोग पहले तो लिख लेते हैं कि फोर्थ फ्रॉम एंड का मतलब क्या होगा, बिगिनिंग से कौन सा, तो बिगिनिंग से क्या हो जाएगा 9 minus 4 plus 2, तो कितना आ रहा है देखो 9 minus 4 is 5, 5 plus 2 is 7. So basically we need to find t7 or 7th term. So t7 will be, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे 6 plus 1, तो यहाँ पे n का वैल्यू तो 9 है, so it will become 9c6 first term which is x to the power 3 to the power of their difference, मतलब कि 9 minus 6, और second term to the power of r मतलब कि 6. तो देखो ये कितना आ रहा है 9c6 x to the power of 3 times 3 9 it will become, and minus 1 to the power of even which will make it positive. So r 9c6 x to the power of 3. This is the answer. 9c6 का वैल्यू जो होता है वो लिख लेना. भैया कोई आया है. Okay, now you all try these questions on your own. Try to solve it. Pause this video and take a screenshot or note on the questions and try it on your own. We'll discuss the solution in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.